Assalamu alaikum everyone, welcome to the class. This is a brief intro of myself, or I'll be taking regular classes from now on, although my YouTube hasn't been very active for the last few months. Again, आज से I'll start making relevant content for you guys, and by the end of this academic year, I'll try to finish the entire syllabus of physics as well as math. Let's start with physics first. आज हम इंशाल्लाह will try to do a few concepts related to the chapter of forces. Now, what is a force? So, a force is basically a push or a pull on an object. And a force is a vector quantity. What is meant by a vector quantity? Vector quantities are those quantities which have magnitude as well as direction. What do we mean by magnitude here? Magnitude. अब हम force की ले लेते हैं एक example. Let's randomly take a value. I'm just taking 100 newtons here. अगर मैं 100 newtons ले रहा हूँ, तो ये जो 100 है, ये this represents the magnitude. वो size को कहते हैं, number को कहते हैं. And n here of course is the unit of force, newtons basically. अब what is the direction? Direction हम जैसे हमारे पास एक force है towards the right side या east direction ऐसे कहते हैं, and the size of this force is 50 newtons. तो ये जो arrow है, this basically shows the direction. तो forces हमारे पास, force is a push or a pull on an object and it is a vector quantity. Vector quantities में we have magnitude as well as direction like this. तो जो स्केलर होती हैं उसमें हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, साइज होता है, डायरेक्शन नहीं होती. यहाँ पे कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, और अगर हम देखें तो इट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स एज यू कैन सी हियर, राइट. इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स है. Right, we have friction here. Friction is a force that opposes motion. फिर हमारे पास normal reaction, this is also known as contact force. और यहाँ पे ये weight को counter करने के लिए this is opposite to the weight here. Otherwise, if weight was the only force here, इस table पे अगर कोई normal force या contact force ना होती, this is likely to have fallen down rather than stay in its position. तो ये normal force जो होती है, contact force, this count as the weight in these cases. अब कुछ फोर्सेस को हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस देख लें. फर्स्ट वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस. उसमें से एक हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स है. फ्रिक्शन फोर्स इज अ फोर्स दैट अपोजेज मोशन. जैसे दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, एटलीस्ट इट सीम्स लाइक इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो अगर ये हमारे पास मूवमेंट की डायरेक्शन है, तो द फ्रिक्शन वुड बी ऑपोजिट टू दिस डायरेक्शन, मतलब इसकी डायरेक्शन होगी ये, and it is represented by these red arrows here as well. This is the direction of motion. ये blue वाले, red वाले arrows represent friction in this case, right? We have other forces which are known as frictional forces. For example, air resistance. So inshallah we'll discuss it in a bit in greater detail. Then we have gravitational force. ये weight की force है और ये हमेशा होगी vertically downwards, as you can see from these arrows. राइट, ये इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल और इसे हम कहते हैं वर्टिकल, राइट. तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की साइड में इन द साउथ डायरेक्शन. अप्लाइड फोर्स, दिस बॉय इज पुशिंग दिस, मतलब ये पुश कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो ये अप्लाइड फोर्स होगी. फिर हमारे पास स्प्रिंग की भी फोर्स होती है, वो इसे हम टेंशन भी कहते हैं, राइट. इसे स्ट्रेच भी कर सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं. तो जो स्प्रिंग्स की या स्ट्रेची ऑब्जेक्ट्स की जो फोर्स होती है, दैट फोर्स वी कॉल टेंशन. ये सारी हम ग्रेटर डिटेल में डिस्कस करेंगे इन अ बिट. यहाँ पे बस एक ब्रीफ इंट्रो है ऑफ द टाइप्स ऑफ फोर्सेस. नाउ द ड्रैग फोर्स इन दिस एग्जांपल इज एयर रेजिस्टेंस. एयर रेजिस्टेंस है. अब मोशन ऑफ दिस एयरप्लेन इज इन दिस डायरेक्शन. ये मोशन है इसका, जस्ट राइट हेयर, ये मोशन की डायरेक्शन है, राइट. और एयर रेजिस्टेंस अगर आप देखें, दैट इज ऑपोजिट टू द मोशन, राइट. तो एयर रेजिस्टेंस इज अ फ्रिक्शनल फोर्स, उसे हम ड्रैग फोर्स भी कहते हैं. तो दैट विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. अब दिस ऑब्जेक्ट इज ऑन दिस टेबल, तो ये हमारे पास डायरेक्शन है वेट की, ठीक है. यहाँ पे आई जस्ट राइट इट हियर, ये वेट की डायरेक्शन है. एंड ऑपोजिट टू द वेट is our normal force. We also call this contact force, right? You can also call this
या नॉर्मल रिएक्शन भी इसे हम कहते हैं. We can also call this contact force. So contact force, in this case it is opposing the weight of this object. Weight is vertically downwards, normal contact force in the upward direction which is countering this weight. क्योंकि अगर हमारे पास normal reaction, ये अगर टेबल इसे पुश ना कर रहा होता in the upwards direction which is equal to the weight, तो ये नीचे मूव कर जाता, right? For example, I'm sitting on a chair. Why am I not moving downwards when I have a weight that is acting vertically downwards? The reason is this chair is pushing me back with the same force as my weight. Let's suppose my weight is 500 newtons, so exact same force in the upward direction of this chair on me, right? इसलिए vertically I'm not moving, I'm in the same position. Then we have magnetic forces as well. ये poles की forces होती हैं. And then we have lastly we have electric force. ये charges की होती हैं. For example, हमारे पास like charges are positive, they repel each other. Like charges repel. Unlike charges, that means positive and negative, they would attract each other, right? तो ये हमारे पास electrostatic forces भी इसे कहते हैं.